Hi guys, very good morning. How are you doing? I hope everyone's doing well. Let's get started with our session for the day. तो अपना अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं. एक्सेल कैट 23 आने वाला है 6 जुलाई से. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल बैच. तो अपना अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं. एक्सेल कैट 23 आने कंप्लीट रोड मैप आएगा जुलाई 9 से. लंबे लंबे बैचेस हैं. ओके, ए स्कैट विद एक्सक्लूसिव एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है. 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, 3 मंथ फ्री है, 10% ऑफ है. 27,800 रुपये पड़ रहे हैं. आइकॉनिक में 15 मंथ्स का लोगे तो 3 महीने फ्री होंगे, 10% ऑफ है. 45,900 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस है. बहुत अमेजिंग चल रहा है. इट्स वैलिड टिल 8 जुलाई टिल 11:59. तो अब तो ख़त्म हो चुका है. एनीवे, अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ होने वाली. ये सारे फ्री मॉक्स हैं विच यू कैन सब्सक्राइब टू. 2 घंटे के हैं. 66 क्वेश्चंस है. 10 जुलाई, 14 अगस्त, 11 सितंबर, 9 अक्टूबर एंड 13 नवंबर सारे टेस्ट होंगे. दीज विल बी हाई क्वालिटी फ्री मॉक्स. इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो. ऑल्सो अनअकैडमी कैट सब्सक्रिप्शन में, प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे फीचर्स हैं. आइकॉनिक में भी बहुत सारे फीचर्स हैं. So if you wish to take advantage of all of this lovely teaching that we are doing, do just subscribe to Unacademy right away. All you have to do is use CAT live to subscribe and you are on your way. If you wish to take an EMI plan also, we've got EMI plans. A 24-month course with Unacademy in the Plus platform will be 1,646 and in the Iconic platform will be 2,771. And on top of it, you will also get a 10% off if you use CAT live. तो बहुत ही amazing offer है इसका. मैं और क्या बोलूँ, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है. All right, we will exit this and then. Alright, so if you haven't yet connected with me on Unacademy, do connect with me on Telegram. मेरा Telegram का डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से यूज़ कर लो. अभी कैट लाइव मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है जिसका तुम पूरा फ़ायदा उठा सकते हो और सारे ऑफ्स ले सकते हो. ओके, शुरू कर देते हैं अपना आज का आर्टिकल. Oh, good morning guys. Lovely to have all of you. I hope everybody's hit the like button. If you haven't yet hit the like button, जल्दी से ठोको सारे like भैया. I want to say महाकाल की जय and like ठोको like, but of course that cannot happen. But yeah, go ahead and hit all the likes that you can. And don't hit the like button twice. Just once is enough. Okay, let's get to know these words. Inception means birth. जिस समय पे कोई चीज़ भी पैदा होती है उसको कहते हैं टाइम ऑफ इंसेप्शन. नॉट जस्ट अ मूवी स्टारिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो. सिम्युलेट मीन्स टू कॉपी और टू एक्ट लाइक समथिंग. जॉनरा इज अ कैटेगरी. सो RC genres are so important. Different types of reading comprehensions you must practice. Conventional is boring, regular, just your usual stuff. Syntax is the grammar of something. कोई भी चीज़ का syntax होता है, चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, चाहे हमारी ग्रामर हो, तो syntax तो हर जगह होता है. Probabilistic means something depending on probabilities. Okay, so of course not sure, it is unconfirmed, it may happen like a certain way. Cliched of course is very boring, very repetitive, very mundane, something that happens every single day. Summer vacation आते your mom telling you पानी की बोतल भर दो is the most cliched thing that you will come across. Perspective, sorry, the S is missing here. Perspective is point of view, the way you look at something, that is your perspective, your viewpoint. Okay, so here is our first set of words. Second set of words here, interwoven means all mixed together. So when you weave something and those things are woven together, that's called interwoven. So mixed up. Rhetoric, of course, we understand is very flowery language, so that is rhetoric. Negotiated, of course, is to discussed and finalized. Okay,
So bargained. Knottier of course is complicated. Knotty means complicated. So something that is knottier is more complicated. Cumulative of course is additional, extra. Topple is to make something fall. So if something is standing like this and it just topples, so fall, right? That's called toppling. Stemming means coming from or getting out of some place. Okay. So my fear of driving stems from the fact that I don't know how to drive. Well, that's not true. I do know how to drive, but that is how you say this. Okay. Most people fear things because they don't know about it. So lack of knowledge is where most of your fears stem from. So that's how you use the word stemming. Banal of course is very again mundane, boring, repetitive. बार बार होने वाली चीज़ बहुत ही बनाल हो जाती है, बेनल हो जाती है. मुझे आज तक नहीं पता कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. कभी बनाल बोल देती हूँ, कभी बेनल बोल देती हूँ, मर्जी है आपकी. मे बी यू कैन जस्ट लुक इट अप इन योर डिक्शनरी, मेक दैट एफर्ट. कभी कभी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होनी चाहिए. ओके, आ जाओ आज का आर्टिकल करते हैं. The cliche writes back, and a very interesting article. Chalo. Since its inception in 2015, the research laboratory OpenAI and Elon Musk, I really like Elon Musk. क्या क्या चीज़ें कराता है. And by the way, आज खबर मिली कि ट्विटर से वो पैसे वापस ले रहा है. Elon being Elon. Elon Musk backed initiative that seeks to build human-friendly artificial intelligence has developed a series of powerful language models, the latest being GPT-3 third generation generative pre-trained transformer. So there is this company called, there is this research lab called OpenAI जो कि artificial intelligence पे research कर रही है और इन्होंने एक language model बनाया है जिसका लेटेस्ट वर्जन है GPT-3. यानी ये लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में शायद ट्रांसफॉर्म करेंगे और ज़्यादा सीखा जाए. अ लैंग्वेज मॉडल, लो देखो बता भी दिया क्या है. अ लैंग्वेज मॉडल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिम्युलेट्स ह्यूमन लैंग्वेज. तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो ह्यूमन लैंग्वेज को कॉपी करेगा, दैट इज़ अ लैंग्वेज मॉडल. वाह, लैंग्वेज मॉडल पता चल गया. Like other simulations, जैसे और simulations होते हैं, it hovers between the reductive, the reality is messier and more unpredictable, and the visionary. To model is to create a parallel world that can sometimes make accurate predictions about the real world. तो कभी एकदम reductive हो जाता है, कभी visionary हो जाता है. Reductive means to reduce everything to just very few basic rules. And visionary means we will do whatever we can and however we can, right? So ये दोनों models के बीच में hover करता है, एकदम reductive भी नहीं है, एकदम visionary भी नहीं है. Such language models lie behind the predictive suggestions for emails and text messages. तो ये जो language model है, ये जो आपके फ़ोन में predictive messaging आती है जिसमें आपको लिखना होता है हरी मामा और वो आ जाता है हैरियट. So that is the predictive model, you remember? So that you get, huh? Gmail Smart Compose can complete, I hope this, with email finds you well. That is what we are saying. तो जैसे आप टाइप करना शुरू करते हैं वो अपने आप रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है. आप चाहिए तो उस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करते चले जाइए, अपने आप ईमेल लिखी जा सकती है. Instances of automated journalism, यानी journalism is happening automatically. Sports news and financial reports, for example, are on the rise. तो यहाँ पे automated journalism चल रहा है. While explanations of the benefits from insurance companies and marketing copy likewise rely on machine writing technology. तो अब इंश्योरेंस कंपनी से क्या बेनिफिट है, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की कॉपीज़ हैं, अब ये सब चीज़ें ऐसे ही होने लगी हैं, अपने आप ही कर रहे हैं. AI is writing it for you. You and I are not writing it. We can imagine a near future where machines play an even larger part in highly conventional kinds of writing. So there will be a future जहाँ
एकदम ही कन्वेंशनल काइंड ऑफ राइटिंग होगी, बट ऑल्सो अ मोर क्रिएटिव रोल इन इमेजिनेटिव जॉनराज, नॉवेल्स, पोम्स, प्लेज, इवन कंप्यूटर कोड इटसेल्फ. तो अब मशीन शायद कन्वेंशनल राइटिंग ही नहीं, इमेजिनेटिव चीज़ें भी लिखेगी. यानी वो जो फिक्शन हम लिख रहे हैं, आप नॉवेल लिख रहे हैं, कोई और कहीं बैठ करके कुछ लिख रहा है, वो भी अब मशीन्स लिखेंगे आपके लिए. माय गॉड, देन व्हाट आर वी गोइंग टू बी डूइंग, एंड how is that even possible? Human mind is infinite. तो मतलब ये क्या उसके beyond चले जाएंगे. Today's language models are given enormous amounts of existing writing to digest and learn from. So अभी हम लोग language models को बहुत सारा data feed कर रहे हैं. GPT-3 was trained on about 500 billion words. तो GPT-3 को 500 billion words दिए गए कि खाओ इसको और समझो. These models use AI to learn what words tend to follow a given set of words. तो इसमें AI यूज़ होती है कि यार अगर हम कहेंगे हेलो हाउ, तो आर यू अपने आप ही आ जाए. तो ये ट्रेनिंग उसको दी गई है. एंड along the way pick up information about meaning and syntax. तो और मतलब सीखते सीखते मीनिंग भी आ जाए और ग्रामर भी आ जाए. ये इन लैंग्वेज मॉडल्स का प्लेटफॉर्म या स्टाइल है. वेरी इंटरेस्टिंग. They estimate likelihoods, the probability of a word appearing after a prior passage of words for every word in their vocabulary, which is why they're sometimes called probabilistic language models. तो they estimate कि अगर ये word लिखा है पैराग्राफ में, लास्ट पैरा में, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये वर्ड आने की क्या probability है, and then accordingly they frame those sentences. There's the Turing test. Remember Alan Turing? क्या ही स्टोरी थी. To what extent can machine writing now sound like human writing in general, or mimic a particular author or a kind of writing as if enlisted to play the party game ex libris? Well, quite well it turns out. So machine writing can now sound like human writing pretty much. Our cliched distaste for cliches, so we don't like cliches, okay, points us in a promising direction. So the fact that we don't like cliches takes us to a promising, very interesting direction. Okay, to make sense of the dizzying thought of machine writing churning out sentences purely on the basis of probability, we need to understand language models such as GPT-3 not only as advances in AI and computational linguistics, but from the perspective of the interwoven histories of writing, rhetoric, style and literature too. तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, AI आ जाएगा, GPT आ जाएगा, उससे राइटिंग होने लगेगी, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट दीज लैंग्वेज मॉडल्स, but we also need understand them as advances in AI and computational linguistics. That means how well you can calculate your language, but we must also see it from the perspective of the history of writing, of rhetoric, of style and literature. It is not just a particular thing. Because if you remember, अगर 17th century में आप literature ले रहे हो और अगर 22nd century में literature ले रहे हो, the style of writing would be so different. So the AI model would also have to be predictive about when this literature was written. So ये सारी चीज़ें भी आपको interweave करनी पड़ेगी अपने language models में. It cannot be just anachronistic. It cannot not have time. It has to have that sense of time also. Romantics weren't as free from convention as they declared. Okay, like all artists, they negotiated between convention and innovation. Still, the history of probable language leaves us with much naughtier questions about today's language models, such as GPT-3, which can seem as if they have some capacity to think and to author. So जो रोमांटिक्स थे, वही मैंने कहा ना 17वीं 18वीं शताब्दी के राइटर्स, उनकी लैंग्वेज भी कुछ अलग तरीके की थी, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए मॉडल्स को उस तरीके से वर्क करना पड़ेगा. To make matters more interesting, our writing today has followed romanticism in shaking off the deep tradition of cumulative commonplaces. तो आज की writing जो है वो बहुत ही unusual, unpredictable है. So we are like the romantics in that sense that we are not really following a common history, a common style of writing anymore. Depending on what one believes about art and politics, one can conclude anxiously that technologies such as machine writing threaten human originality. तो आप ये चीज़
कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन ओरिजिनलिटी को थ्रेटन करेगा. An idea stemming from the romantics, or that machine writing is helping to topple that very focus on the individual creative writer. So machine writing जो है will stop us from focusing from the creativity of one particular man, one particular writer, one Shakespeare, one James Joyce, or anything like that. Very interesting write-ups. That is what I like about Aeon essays. They really make you think. What does it mean to compose with language models? The partnership strains language itself, and yet today's automated writing pointedly recalls a variety of modernist and later artistic experiments which further complicate ideas about individual human authorship and art. So now we are using language models. How are you going to be writing? तो फिर human creativity, human art का क्या होगा? तो पूरा बहुत complicated web हो जाएगा. We collectively long for the banal. There is an elusive ratio between the familiar and the fresh. हमें वो रेगुलर चीज़ें चाहिए, हमें वही हिंदू का एडिटोरियल का स्टाइल चाहिए, सरकार को बुरा बुरा कहता हुआ, बहुत तीखा वर्ड्स में लिखा हो. We want that regularity. In the age of machine writing, a new romanticism might caricature that dictator. Majority, as Kumar and Melamed did, stringing together our most commonplace phrases. तो वो जब मेजॉरिटी वाला वो है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, वो ही होने लगेगा हमारी राइटिंग में. और इट माइट एज ऑंग सजेस्टेड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज बना दे, विच आई डोंट थिंक सो. और मे बी समथिंग एल्स ऑल टुगेदर विल इमर्ज. कुछ ऐसा ही आ जाए कि भाई पता नहीं. बट एट द हार्ट ऑफ द मैटर इज द क्वेश्चन पुट बाय कुमार, डू यू एक्सपेक्ट टू सी द अनएक्सपेक्टेड व्हेन यू लुक एट आर्ट. तो आप जब आर्ट देखते हो तो क्या आप एक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो या एक्सपेक्टेड चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो? वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू सी? द सेम गोज़ फॉर राइटिंग ऑल्सो. When you're reading something, do you want something unusual or do you just want your regular rhetorical, boring, banal stuff? Cliches चाहिए हैं या कुछ एकदम ओरिजिनल चाहिए? What is the main idea of the passage? प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा पैसेज. एक बार गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ ज़रा सबको, तब तक तुम लोग पढ़ो. गुड मॉर्निंग अर्चित, तेजस, एमर, मुकुल, नंदिनी, गौरी, अंजलि, शुभम, सोनू, लकी, पंकज, सुनीपा, छोटे त्यागी, आंचल, अमन, देवजानी. गुड मॉर्निंग यू गाइस. आदित्य, गुड मॉर्निंग. आदित्य आज फ़ोन कर लेना, ठीक है ना? Alright, which of the following is the main idea of the passage? Machine written literature has no drawbacks, unlike traditionally written literature. Machine written literature has no future in the long term, considering the lack of creativity. Machine written literature will take over in the future, even if traditional writing licks up the pace. Machine literature might offend your taste, but until the dawn of romanticism, most writers were just as formulaic. Oh, that's very interesting. So A तो नहीं होना चाहिए, हटा देते हैं. B भी नहीं होना चाहिए, has no future in the long term नहीं कहा जा सकता है. C और D में से सोचना है. Machine written literature will take over in the future, even if traditional writing licks up नहीं, picks up pace. Why I don't know, why am I saying licks up pace? Picks up pace. तो अगर traditional writing speed up भी कर जाए तो भी machine literature जो है वो स्पीड अप कर लेगा. एक्चुअली हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि इट विल टेक ओवर इन द फ्यूचर. कैन वी रियली से दैट? नॉट एट ऑल. सो देन आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट मशीन रिटन लिटरेचर हमें वो बहुत ही बोरिंग रेपिटेटिव लिटरेचर दे देगा. बट रिमेंबर दैट जब तक रोमांटिसिज्म नहीं आया था तब तक राइटर्स भी वैसे ही बोरिंग थे, पैटर्न पे चलते थे, और इसीलिए गुड आंसर डी. ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ऑप्शन सी सेड दैट इट विल स्टार्ट, दैट इज व्हाट विल अकर. मशीन लिटरेचर ही रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा. OpenAI, a research laboratory initiative, is backed by which of the following as per the passage? Jeff Bezos, Tim Cook, Elon Musk, Bill Gates.
सो एज पर द पैसेज हमें पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. येस, करेक्ट आंसर इज एलॉन मस्क, और इसमें कोई आंसर हो ही नहीं सकता है. पूरे पैसेज में सिर्फ एलॉन का नाम दिया और किसी का नाम ही नहीं दिया है. ऑलराइट, स्ट्रक्चर क्वेश्चन. Okay, so we can imagine a near future where machines play an even larger part in highly conventional kinds of writing, but also a more creative role in imaginative genres. Statement B says language models are given enormous amount of existing writing to digest and learn from. And the question says what is the relationship between A and B? A is the cause, B is the effect, A is the effect, B is the cause, both are effects of a common cause, or both are unrelated. I will just shift out a little bit so that you can read the question. All right. So in this statement, statement B says that language models are given enormous amounts of existing writing to digest and learn from. उनको बहुत सारी लर्निंग दे रहे हैं और AI का मॉडल है, प्रेडिक्टिव है, तो वो लर्न कर भी पा रहे हैं. और इसीलिए वी कैन इमेजिन अ नियर फ्यूचर वेयर मशीन्स विल start doing a lot of conventional writing, but also will take up more creative role in the imaginative genre. So B being the cause, E being the effect, the answer will be B is the cause, A is the effect, so option number B. Okay. If I ask why can we imagine a near future where machines play an even larger part in regular writing and more of a part in creative writing, the answer will be because they are given enormous amounts of existing writing to digest and learn from. So they will be able to learn from those models and then take it forward. Okay. So therefore A being the effect and B being the cause. Alright, what is the meaning of banal? Is it euphoric, accentuate, vapid, or suture? Alright, this one is very easy. So banal means very boring. Okay. So euphoric of course is very happy, very joyful, so that cannot be the correct answer. Accentuate means to emphasize something, so again that cannot happen. Suture is thread to tie or injuries, so that also no. So vapid is very boring, something that has no life, it is very lifeless, that's vapid. So therefore correct answer C. Alright, what is the correct meaning of heart of the matter? Okay, is it cursory, is it kernel, is it imitation, is it illusionary? What is the heart of the matter? हार्ट ऑफ द मैटर मतलब एकदम कोर, असली चीज जो एकदम अंदर है. तो कर्सरी स्पेसाइल जो एकदम अनकेयरिंग है, सो दैट कैनॉट बी द राइट आंसर. इमिटेशन मीन्स टू कॉपी समथिंग, तो वो भी नहीं हो सकता है. इल्यूजन मीन्स फेक, अगेन दैट कैनॉट बी. कर्नल इज द करेक्ट आंसर. कर्नल यानी जो इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी चीज़ का, उसको कहते हैं. तो हार्ट ऑफ द मैटर या कर्नल, दैट्स द करेक्ट आंसर. ओके.
ऑलराइट गाइज, सो हियर वी आर। मंडे से गाइज हम लोग अपना रेगुलर शेड्यूल शुरू करेंगे, स्पेशल क्लासेस जो उसके टाइम पे होती हैं, एंड होपफुली बैचेस ऑल्सो। बैचेस का भी पक्का नहीं है तो वो मैं पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, बट अदर देन दैट एटलीस्ट स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ताकि तुम लोग स्पेशल क्लास में ही आकर के पढ़ते रहो। ये जो मिस हो रहा है जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट बीन, मुझे बताया नहीं रहे क्या क्लासेस करने हैं, सो वी विल नॉट डू दैट, वी विल जस्ट कंटिन्यू विद आवर बैचेस। ओके, so 10 a.m. let us start with our classes. Also guys, remember to hit like, share, subscribe and the bell icon ताकि हम लोग connected रह सकें। और किसी को भी ज्वाइन करना अभी कैट लाइव यूज़ करा के ज्वाइन करो, अभी बहुत ऑफर चल रहे हैं ढेर सारे, 15 महीने पे 3 महीने फ्री है, 10% ऑफ भी मिलेगा अभी कैट लाइव यूज़ करने पे, तो बिंदास यूज़ करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू हैव हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू एट 10 a.m. फॉर द वोकैबुलरी क्लास। जल्दी ही मिलेंगे, 10 बजे है वोकैबुलरी क्लास, कहीं जाना नहीं, अभी आज है, इतने दिन बाद तो पढ़ रहे हैं तो आ जाओ।